Hello students, I am Jayant Kumar Arora, PGT Business Studies, Delhi Public School, Saibabad. Students, today we are going to discuss on the topic social responsibilities of business and business ethics. As we all know that business we do only for the profit, but isn't no responsibility of a businessman for the society? As society is giving manpower to the business, society is giving all the resources to the business, and the business getting profit from this society. So if there is no responsibilities of the business towards the society, I wanted to share a story with you. Few years back, I saw a news on the TV channel that few persons died just due to eating food cooked in a oil sold by some shop, and I start believing that business people tend to do anything to mint money, manufacture and sell and adulterated goods, making deceptive advertisements, not paying taxes which are due, polluting the environment and exploiting workers, are some examples of socially undesirable practices which may measure the profit of enterprise but have adverse effect on society at large. But the good one is that one day again I watched news and I found one good businessman is giving an interview to the news anchor, and I was very happy to listen that he is a chairman of a well-known company which is known for its fair dealing with the customers, employees, investors, as well as the other social groups. Through this interview, I developed the understanding that it is possible for business firm to socially responsible, and that it is possible for business firm to be socially responsible and ethically upright, and at the same time be highly profitable. So, friends, students, a business enterprise should earn money by fulfilling the expectations of the society. To be socially responsible, it should supply quality goods, create healthy working conditions, pay taxes honestly, install the pollution devices in the factory, and attend to customer complaints sincerely. This will definitely improve the image of goodwill of the enterprise and also make it profitable. In fact, it is through socially responsible and ethical upright behavior that business enterprises can get durable success. Students, in my views, a business should sell practical, tested merchandise at reasonable profit and treat their customers like human beings. Like human beings. And they will always come back. Customers tell people more about bad experience than about good experiences. So students, we should keep this in our mind that if a businessman is getting too much resources, manpower from the society, profit from the society, why not he has some responsibilities towards the society? So the concept of social responsibility tells us that a business refers to its obligation to take those decisions from those actions which are desirable in terms of objectives and values of our society.
So, students, we should be understand that social responsibility is a broader than legal responsibility of the business. Legal responsibility may be fulfilled by mere compliance with the law. Yes, students. Social responsibility is more than that. It is firm's recognition of social obligations, even though not covered by law, along with the obligations laid down by the law. Yes, students, we must be very much aware of this. That social responsibility towards the businessman is different interest groups we can understand about general public, shareholders, employee or workers, consumers, customers, government, local community, environment, etc. आइए इसको आप और थोड़ा सा अच्छा समझिए. Responsibility towards the shareholders, investors, owners to pay a fair return on their investment, to ensure the safety of their investment, to provide regular, accurate and full information about the working of business as well as schemes of future growth. बहुत जरूरी है. जिन्होंने हमारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करी है, हम उनको बहुत ईमानदारी से रिटर्न तो करें. To maximize the shareholders' wealth, increase in the market value of the shares. Now, responsibility towards the worker. To pay the fair wages, salaries to the workers and employees. To provide right kind of working conditions. To provide service benefits. To develop their skills through giving training and education. To respect the democratic rights of the workers and to form the unions, etc. ये सब responsibilities businessmen की हैं. And responsibilities towards the consumer. To supply the right quality and quantity of goods and services at reasonable prices. Students, जब मैं छोटा था, हम लोग घूमने वैष्णो देवी जाया करते थे. वहां से एक रिवाज है कि अखरोट का प्रसाद हम लाते हैं और अपने रिश्तेदारों को बांटते हैं. हमने वहां से कुछ अच्छी क्वालिटी के अखरोट्स का ऑर्डर किया और वहां से वापस लाए. बहुत पहले की बात है, करीब 30-35 साल पहले की बात है बच्चों. जब हम घर आए तो हमने देखा कि जो अखरोट क्वालिटी हमने पसंद करी थी, जिसकी हमने पेमेंट करी थी, वो हमें नहीं मिली. तब हम चीटिड फील कर रहे थे. हम इतनी दूर जाकर वापस उनसे नहीं खरीद सकते थे. तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेसमैन की है कि वो राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी और रीजनेबल प्राइस पर उसको दे. टू एंश्योर रेगुलर एंड एडुकेट सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स. To avoid any unfair trade practice such as adulteration, hoarding, black marketing, underweighing, misleading advertisement, etc. should not be there. This is the responsibility of the businessman. If he wants to stay in the business for the long term, he has to accept his responsibility to inform them about new products and new uses of the existing products, to handle the customer's grievances promptly. Students' responsibility towards the government and community. Government के लिए भी तो कोई ना कोई responsibility है businessman की. What is that? To respect the laws of the country, to pay the taxes regularly and honestly, to behave as good citizen, act according to well accepted values of the society, to develop the proper image in the society through the continuous interaction with various groups of the people. Yes, students, there are some arguments also for the social responsibility.
बिजनेसमैन कहते हैं कि हमें तो बहुत लंबे टर्म की ग्रोथ करनी है, हमें वहां पे एग्जिस्ट करना है, तो हमें ये सब जस्टिफाई करने ही पड़ेंगे। Businessman says that business exists for providing goods and services to the safety of the human needs. Though profit motive is an important justification for undertaking business activity, but it should be looked upon an outcome of the service to the people. In fact, the prosperity and the growth of business is possible only through the continuous services to the society. Long-term interest, certainly, a firm can earn maximum profit in the long run when it has the highest goal as service to the society. Yes, students, service to the society, very much necessary. Service to the society. Avoidance of government regulation. Yes, students, from the point of view of a business, government regulations are undesirable because they limit the freedom. Therefore, it is believed that businessmen can avoid. It is believed that businessmen can avoid government regulations by voluntarily assuming social responsibility. वो खुद सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मानकर गवर्नमेंट के रेगुलेशन को अवॉइड कर सकता है। गवर्नमेंट कानून क्यों बनाएगी अगर आप खुद ही अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को, अपने उत्तरदायित्व को समझ रहे हैं। बेटर एनवायरनमेंट फॉर डूइंग बिजनेस। Certainly, if business is operating in a society which is full of diverse and complicated problems, it may have little chance of the success. A society with fewer problems provides better environment for a firm conduct to its business. ये बहुत जरूरी है. Holding business responsible for social problems. It is argued that some of the social problems have either been created by business enterprise themselves. ऐसा माना जाता है कि कुछ प्रॉब्लम तो बिजनेसमैन खुद ही खड़ी करता है. Environmental pollution, unsafe workplaces, corruption in the public institution, discriminatory practices in the employment. Therefore, it is moral obligation of the business to get involved in solving these problems. कुछ प्रॉब्लम जो बिजनेस ने खुद दी हैं उनको सॉल्व तो बिजनेस भी करना पड़ेगा. Instead of merely expecting that the other social agencies will deal with them on their own. Students, corporate social responsibility ये एक शब्द है लेकिन इसके बहुत सारे मीनिंग्स हैं. अगर हम इसकी डिटेल में भी जाते हैं तो हमें समझना पड़ेगा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. हालांकि यूरोपियन कमीशन ने इसको डिफाइन किया है और कहा कि द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंटरप्राइजेस फॉर देयर इंपैक्ट्स ऑन सोसाइटी. कि एंटरप्राइज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके कारण सोसाइटी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है. सो CSR refers achieving commercial success in ways that honor ethical values and respect people, communities, and natural environment. CSR refers addressing the legal, ethical, and commercial expectation of society by corporates. It is a comprehensive set of policies, practices, and programs that are integrated throughout the company. So it should be undertaken. Students, yes, role of business in environmental protection was also a very much of concern. बहुत समझने की जरूरत है इन सब बातों को. किस तरह से किसी बिजनेस का वातावरण को बचाने में रोल है. सबसे पहले जैसे आप समझ सकते हैं, द टॉप मैनेजमेंट ऑफ एंटरप्राइज मस्ट कमिटेड टू क्रिएट, मेंटेन एंड डेवलप एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस. स्टूडेंट, आपके स्कूल में भी आपने देखा होगा आपके प्रिंसिपल बार बार आपको समझाती रही हैं, आपके टीचर्स समझाते रहे हैं कि स्कूल में प्लास्टिक का यूज नहीं करना.
किस लिए कहा जाता है? क्योंकि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए एक मुहिम चलाई जा रही है, से नो टू प्लास्टिक, जिसकी वजह से हर जगह पोल्यूशन मींस कि अगर टॉप मैनेजमेंट कहीं कमिटेड हो जाती है तो उसके बाद सारा का सारा इंस्टीट्यूशन, सारा बिजनेस एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए कमिटेड हो जाता है। तो कमिटमेंट स्टार्ट होती है टॉप मैनेजमेंट से। So ensuring that commitment to environmental protection is shared throughout the enterprise by all division and employees. और उसके बाद ensure करना है कि हर जगह हर एम्प्लॉय हर सब उस environmental protection की पॉलिसी को अप्लाई करेंगे और ऐसी पॉलिसीज बनाएंगे कि जो रॉ मटेरियल खरीदना है वो भी क्वालिटी का हो, पोल्यूशन ना हो, साइंटिफिक टेक्निक्स हो, उसको डिस्पोज करने के लिए जो भी वेस्ट मटेरियल उस फैक्ट्री से निकलेगा, the enterprise must comply with the laws and regulations enacted by the government for prevention of pollution. Role of business environment protection, participation in government programs like management of hazardous substance, clearing up of polluted rivers, plantation of trees. हर एक का एक फर्ज बनता है, बिजनेसमैन का भी फर्ज बनता है, पेड़ ज्यादा से ज्यादा ट्रीज प्लांट किए जाएं, रिवर में कम से कम पोल्यूटेड वेस्ट डाला जाए, periodical assessment of pollution control programs in terms of cost and benefits so as to increase the progress with respect to environmental protection. समय के साथ साथ बार बार इस चीज को देखा जाए कि क्या environmental protection का काम, pollution control का जो प्रोग्राम्स है वो चल रहा है कि नहीं चल रहा। Arranging educational workshops and training material to share technical information. ऐसी बार बार वर्कशॉप्स कराई जानी चाहिए, इस ट्रेनिंग दी जानी चाहिए ताकि सबको इस बात का एक्सपीरियंस हो कि किस तरह से एक बिजनेसमैन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डील कर रहा है। कंसेप्ट ऑफ बिजनेस एथिक्स। स्टूडेंट्स, एथिक्स का मतलब है व्हाट शुड डू, व्हाट शुड नॉट डू, व्हाट इज राइट, व्हाट इज नॉट राइट। तो आप बिजनेस एथिक्स को समझ सकते हैं। पहले यार रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारा ट्रस्ट कितना है, हमारा बिहेवियर कैसा है, हमारे क्या क्या प्रिंसिपल्स है, सिद्धांत हैं, हमारा कस्टमर्स के साथ या दूसरे लोगों के साथ कैसे रिलेशनशिप्स हैं, हमारी चॉइस क्या है। जैसे मैं कहता हूं आई से नो टू प्लास्टिक, क्या ये मेरी चॉइस है या नहीं, ये मुझे जानना है। यही बिजनेस के एथिक्स है। रिलायबिलिटी, लोग उसको कितना रिलायबल समझते हैं और कितनी हम नैतिकता उसमें रखते हैं, कितनी ईमानदारी हम समझते हैं। सो एथिक्स इज कंसर्न विद व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग इन द ह्यूमन बिहेवियर। आप अपने अंदर बार बार सोचें क्या सही क्या गलत, यही है आपकी एथिक्स and the standards approved by the society in particular field. Business ethics is but about being honest to your customers. Yes, students, business ethics is about to being honest to your customers, society, employer, and employees. Being honest, you are with ethics. Business ethics refers to socially determined moral principles which should govern business activities. समाज ने उसको मान्यता दी हो, उन सिद्धांतों को हम अपनाएं और उनके आधार पे अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को करें। स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स में हम समझने जा रहे हैं हमारी क्या कोर वैल्यूज है, बिजनेस की क्या कोर वैल्यूज है, बिजनेस के गोल्स क्या है, बिजनेस टीम वर्क से चलता है, बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कस्टमर्स के साथ क्या वैल्यूज हैं, बिजनेस एथिक्स हैं, ट्रस्ट, हमारे में कितना विश्वास है। सो सबसे पहली बात, टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट। जो भी मैनेजमेंट हम साथ कमिट कर लेती है, पूरे बिजनेस में एम्प्लॉयज उसको फॉलो करते हैं, तो उनका कमिटमेंट जरूरी है। पब्लिकेशन ऑफ अ कोड, बिजनेस ने क्या क्या रूल्स अपने बनाए हैं वो पब्लिश करके सबको बताना जरूरी है कि आपको इन रूल्स में रहना। Establishment of compliance mechanisms involving employees at all levels, measuring results, और बार बार फीडबैक के साथ रिजल्ट को मेजर करना है
कि जो हमने सोचा था क्या वास्तव में वो हो रहा है। टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट को हम समझें, द सीईओ ऑफ हायर लेवल मैनेजर्स मस्ट बी कमिटेड टू एथिकल नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर। किसी भी बिजनेसमैन के लिए बहुत जरूरी है कि उसका बिहेवियर ही तय करेगा कि उसके एम्प्लॉयज किस किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। शायद इसीलिए टॉप मैनेजमेंट को डायरेक्टर कहा जाता है। This would set an example for all employees and encourage them to follow ethical principles. टॉप मैनेजमेंट एक उदाहरण पेश करती है अपने सभी एम्प्लॉयज के लिए और उनको एथिकल प्रिंसिपल्स पर चलने के लिए एनकरेज करती है। पब्लिकेशन ऑफ अ कोड। Code of ethics is formal written document of the principles. Values and standards guide a firm actions. स्टूडेंट्स, आप लोगों को जो एक स्टूडेंट एल्मनक मिलता है उसके अंदर भी कोड ऑफ कंडक्ट पब्लिश होता है कि आप अगर स्कूल में आएंगे तो आपको किस तरह का बिहेवियर करना है, यूनिफॉर्म पहननी है, डिसिप्लिन में रहना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। यानी वहां से आपको पता चल रहा है कि यहाँ व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग। यहां पर वो कहता है दिस जनरली कवर्स द एरिया सच एज फंडामेंटल ऑनेस्टी एंड एडहेरेंस टू लॉज। बहुत जरूरी है ईमानदारी और कानून के प्रति श्रद्धा। प्रोडक्ट सेफ्टी एंड क्वालिटी। जो भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है वो सेफ हो और क्वालिटी का प्रोडक्ट। हेल्थ एंड सेफ्टी इन द वर्क प्लेस। वर्कर्स को भी सेफ्टी रहे, जहां उनकी हेल्थ बनी रहे। आपने देखा होगा आज अगर कोरोना फैल रहा है तो बिजनेसमैन खुद अपनी तरफ से सैनिटाइजेशन करा रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं वो लोग, बहुत सारे सैनिटाइजेशन प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, मास्क खरीद रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज को दे रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज की हेल्थ के लिए सजग है, उनका इंश्योरेंस भी करा रहे हैं। ये बिजनेस एथिक्स है। फेयरनेस इन सेलिंग मार्केटिंग प्रैक्टिसेस। बहुत जरूरी है कि जो भी आप गुड्स या सर्विसेज बेच रहे हैं या एडवर्टाइजमेंट्स कर रहे हैं वहां पे आप एक फेयर डील करें, ऑनेस्टी दिखाएं। So this is called as codes of ethics. Now, establishment of compliance mechanism. In order to ensure the actual decision and the action comply with the firm's ethical standard, suitable mechanism should be established. बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स कि क्या डिसीजन वास्तव में लिया गया और क्या डिसीजन एथिकल स्टैंडर्ड में आता है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि बिजनेसमैन को एक कमेटी बनाई जानी चाहिए, वो बार बार एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करे कि अपने आप चेक किया जा सके कि क्या हमारे जो भी वर्क हो रहा है वो एथिकल हो रहा है। जैसे पेइंग अटेंशन टू वैल्यूज एंड एथिक्स इन रिक्रूटिंग एंड हायरिंग द एम्प्लॉयज। जब एम्प्लॉयज को रिक्रूट किया जा रहा है, हायर किया जा रहा है, उस वक्त इस बात पे बहुत ज्यादा सावधानी देखनी है कि क्या वो रिक्रूटमेंट एथिकल है, सही क्वालिफिकेशन से कर रहे हैं, कोई बायसिंग तो नहीं है। एम्फेसिसिंग कॉर्पोरेट एथिक्स इन ट्रेनिंग। क्या उन सभी एम्प्लॉयज को कॉर्पोरेट ट्रेनिंग दी जा रही है जिसके अंदर उन्हें कोड ऑफ एथिक्स सिखाया जाए। ऑडिटिंग परफॉर्मेंस रेगुलरली टू एनालाइज द डिग्री ऑफ कंप्लायंस। तो कितनी हद तक वो परफॉर्मेंस उनकी हो रही है उसको बार बार ऑडिट किया जाना चाहिए, जिससे किसी भी बिजनेस की एथिक्स कितने एम्प्लॉयज अपनाए जा रहे हैं, कितने एम्प्लॉयज उस एथिक्स को अपना रहे हैं, ये जांचा जा सके। सो ऑल द एम्प्लॉयज एट ऑल द लेवल्स, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, सबको इस बिजनेस एथिक्स के अंदर इन्वॉल्व होना है। सबको किसी भी बिजनेस इंस्टीट्यूशन की दी गई एथिक पॉलिसीज को एक्सेप्ट करना है और उसको एक रियलिटी, एक वास्तविकता का रूप देना है। Therefore, their involvement in ethics program becomes a must. हर एम्प्लॉय की बिजनेस में एथिक्स से
एथिक्स के कारण अपनी ग्रोथ भी पॉसिबल बनानी है और ये बहुत जरूरी है। Measuring results, yes, in order to ensure ethical behavior within the organization, regular and timing follow-up actions are must. बहुत जरूरी है बार बार अपने आप को चेक करना एक समय अंतराल के बाद, क्या हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वास्तविकता में एथिकल बिहेवियर अपनाया जा रहा है। इट हेल्प्स इन इंश्योरिंग द अचीवमेंट ऑफ डिजायर्ड रिजल्ट्स, क्योंकि बार बार अगर हम इस चीज को चेक करते रहेंगे कि हमारे एम्प्लॉयज, हमारे हर लेवल के एम्प्लॉयज अगर एथिक्स से, बिजनेस कोड ऑफ कंडक्ट से वर्क कर रहे हैं, तो आने वाले रिजल्ट डिजायर्ड होंगे और जिसके कारण बिजनेस लॉन्ग टर्म में ग्रोथ करेगा। यस स्टूडेंट, बिजनेस लॉन्ग टर्म में ग्रोथ करेगा। तो हमने यहां पर इस टॉपिक में समझा that social responsibilities are very much necessary for a businessman, because that businessman is using the resources of the society, hence it has some responsibility also towards the society. Thank you students. Jayant Kumar Arora, PGT Business Studies, Delhi Public School, Saibabad.